Assalamu alaikum. Today we are going to start continuity of the function. In the last lectures we have studied about the infinite limits, vertical asymptotes, limits at infinity, finite limits as x approaches to plus minus infinity, horizontal asymptotes, infinite limits at infinity. In today's lecture, we are going to cover the definition of continuity, continuity on an interval, types of discontinuities, properties of continuous functions, intermediate value theorem. After completing this lecture, you will be able to understand the concept of continuity. You will be able to find the continuity of the function at a point and on the interval. You will be able to find the interval at which the function is continuous. You will be able to find the points of discontinuities of the function. Definition of continuity. The graph of the function can be described as a continuous graph or continuous curve if it has no break or holes. ठीक है, कोई भी ग्राफ continuous curve कब होगा? जब उसमें कोई break या कोई hole नहीं होगा. Means if you are drawing a curve, you don't need to lift your pen while you are drawing the curve. ठीक है, तो आप अगर इस वाले ए ग्राफ में देखें, यहाँ पे we have a hole at point C. ठीक है, the function is not defined at point C. There is a hole, there is no value at point C. In the graph B, we have a break. ठीक है, now the function is defined at C. This is the value of the function at C. Let this is L2 and this is L1. Now discussing about its limit, its left hand limit, that is when x approaches to C from the left side, the function goes to the point L2, L1, sorry, this is L1. Okay, now the right hand limit, when x approaches to C from the right side, the function goes to the point L2. So the left hand limit and the right hand limit are different, so limit does not exist here. Okay, so in the third graph, the limit does not exist because the limit of this function as x approaches to C from both sides is going to infinity. ठीक है, तो जब भी आपकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो इट मीन्स द फंक्शन इज the limit does not exist at that point. ठीक है, so the function is discontinuous at point C. Now in D, in the graph D, the value of the function at C is defined. This is the value of the function at C, and the limit also exists. From the left side is it goes to this point, and from the right side it again goes to the same point. So the left hand limit and the right hand limit is equal. The limit exists and value of the function at 2 is defined, but the value of the function at point C and the value of the limit as x approaches to C is different. So this graph is discontinuous. So the all the four graphs are discontinuous graphs, and the reason is in the part A, the function is undefined. Means if a function is undefined at point C, then this is discontinuous at point C. From B and C, we have if the function is if the limit of the function does not exist at any point C, then this function is discontinuous at that point C. From the fourth graph D, we have if the value of the function at C is not equal to the value of the limit as x approaches to C, then this graph is discontinuous graph.
Now we are going to study the definition of the continuity of the function at a point. A function f is said to be continuous at x is equal to c provided the following conditions are satisfied. First condition is f of c is defined. Means if we are interested to find the continuity of a function at some point c, then first condition is f of c is defined. Now look at this graph. This graph is discontinuous because at point c the value of the function is undefined. So for the continuity, the at a point, the value of the function at that point must be defined. The second condition is limit as x approaches to c of f of x exist. In these two graphs, the limit does not exist at point c, and these two graphs are discontinuous graph. Okay, so for the continuity at any point c, the graph, the limit of the function at that point must exist. Third condition is limit x approaches to c, f of x is equal to f of c. Means the limit of the function at point c must be equal to the value of the function at point c. In this graph, this is a D graph is also a discontinuous graph because there the value of the function at c and the limit of the function at c are not equal. So for the continuity, the value of the function at c and the value of the limit as x approaches to c must be same. Now look at this graph. In this graph, if we study point 1 and point 2, then these 2 points are the points of discontinuity for this graph. The point 1, in the point 1, the limit does not exist at that point because the left hand limit at that point is 0 and the right hand limit as x approaches to 1 is 1. So the left hand limit and the right hand limit are different, so limit at 1 does not exist. So at that point, the condition of the continuity, second condition of the continuity fails. So this function is discontinuous at point 1. Now look at point 2. At point 2, the function is defined and the value of the function is 2. And the limit of the function is also exists, that is left hand limit at point 2 is equal to 1 and the right hand limit at point 2 is also 1. So the limit exists at point 2 and the function is also defined at point 2, but the value of the function at point 2 and the limit of the function at point 2 are not same. So at 2 there is a point of discontinuity for that function. Now the function, now the point 0, 3 and 4. At these points the function is continuous. At point 0, as this is the boundary point, so there exists only one-sided limit and that will be right hand limit. क्योंकि इसके right side पे ही graph exist कर रहा है, तो one sided limit is equal to 1 and the value of the function at 0 is also 1. So this is continuous at 1. Now look at point 3. The left hand limit and the right hand limit goes to the same point, so limit exists and the value of the limit at that point is also same as the value of the limit at that point. Now look at 4. At point 4 the one-sided limit exists and that is left hand limit.
and the left hand limit is 1, and the value of the function at 4 is also 1. So the function is continuous at point 4. In this example, determine whether the following functions are continuous at x is equal to 2. We have to find the continuity of these functions at x is equal to 2. First, look at the function f of x. If we simplify this function, this will be equal to, in the numerator we have x minus 2 and x plus 2. This is the formula for a square minus b square. This divided by x minus 2. We will cancel x minus 2 with x minus 2 and we are left with x plus 2. But there is a condition that x is not equal to 2, because in the numerator we have x minus 2. So this function is not defined at x is equal to 2. Now look at this graph. The function has no value at 2. So directly from the graph we can say this graph is discontinuous because there is a hole at point 2. Now there is condition 1 which is going to fail. Look at this, f of 2 is undefined. This is the first condition for the continuity. Now for g of x we have this function. Now the graph of this function is given. The value of the function at 2 is 3, that is this point on the graph, and now we look at the limit as x approaches to 2 from left side. The limit of the function goes to this point. This is most probably this is 4. Now if we approach point 2 from the right side, the graph goes to the same point 4. So left hand limit is equal to right hand limit. So the limit exists and the value of the function is also defined at 2, but these two values are not equal. And you can directly see from the graph, this graph has a hole. So this is discontinuous graph, and the second condition of the continuity is not fulfilling. Now look at h of x. In this function, the value of the function at 2 is 4. This is value of the function at 2 is 4, and the left hand limit at 2 is 4 and right hand limit of 2 is also 4. So the left hand limit is equal to right hand limit and it is equal to 4, and the value of the function at 2 is also 4. So the condition for the continuity is satisfying. So this function is a continuous function. Continuity on an interval. लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी फाइंड की है एट अ पॉइंट. अब हम लोग फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी फाइंड करेंगे ऑन एन इंटरवल. So the definition is a function f is said to be continuous on a closed interval ab if the following conditions are satisfied. First condition is f is continuous on the open interval ab, means f must be continuous on the interior points of this interval. Yani if we have this interval, then the function must be continuous at the interior points of this interval. ठीक है, तो इंटीरियर
जितने भी पॉइंट्स हैं इंटरवल में, हमारे पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो इंटरवल के इंटीरियर में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स पे आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो अगर आप कोई भी वैल्यू सी कंसिडर करते हैं, लेट सी रिप्रेजेंटिंग द इंटीरियर पॉइंट्स, ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल, तो सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, so the f is continuous. Now in the second condition we have f is continuous from the right at b. If you look at the boundary point a, there is no graph at the left side of a, so there exists only one sided limit, and that will be right hand limit at a. So right hand limit at a must be equal to the value of the function at a. ठीक है, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे, सॉरी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एट द बाउंड्री पॉइंट ए. Now the third condition is f is continuous from the left at b. Means if we look at the boundary point b, there is no graph at the right side of b. So there will be only one-sided limit, and that will be left hand limit at b. So for the continuity, left hand limit at b must exist and must be equal to the value of the function at b. ठीक है, तो जब आप इंटरवल की बात करेंगे तो इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मींस उसके इंटीरियर पॉइंट्स पे, ठीक है, उसके बाउंड्री पॉइंट्स पे. In this example we have to discuss the continuity of the function. The graph of the function is given. This is the semicircle of radius 3. In this graph we have the interval, closed interval from domain of this graph is -3 to 3. We have to discuss the continuity of this graph on this interval. So firstly we will discuss the continuity at its interior points. So let me take the point C, which represents all the interior points of this interval. So the value of the function f at point C is square root 9 minus c square. Now we will find the limit of the function at C. So we will apply the limit at this function. यहाँ पे ये लिमिट्स की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, हम स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उस पर लिमिट अप्लाई किया, ठीक है. सो वी हैव स्क्वायर रूट 9 माइनस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी. तो हमारे पास कॉन्टीन्यूटी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू सी इज सेम. So the function is continuous at interior points of this interval. Now we will discuss the continuity at the boundary points. First we will take the boundary point 3. There is no graph at the left side of the 3, so there exists only one-sided limit, and that will be left hand limit. There is no graph on the right of the 3. So the left hand limit at 3 we will find it will be equal to 0, and value of the function at 3 is also 0. So this function is continuous at the boundary point 3. Now look at the other boundary point, that is 3. There is no graph at the left side of 3, so there is only one-sided limit, and that will be right hand limit. So the right hand limit at -3 is 0, and the value of the function at -3 is also 0. So the function is continuous at -3. So the function is continuous at its boundary points and interior points. So the function is continuous on the whole interval, closed interval from -3 to 3. Now we will discuss the types of discontinuities. In the graph A, there is no hole and no break. So this graph is a continuous function. There is no discontinuity
at any point. Now look at the graph B. There is a hole at point 0. That means the function is not defined at 0. And in the second graph, in the third graph, that is C graph, the value of the function is defined. The function is defined at 0, and the limit of the function at 0 is also exists, because the left hand limit and the right hand limit goes to the same point 1. So the limit exists and the function is also defined on 0, but this function is discontinuous because the limit, the value of the function at that point and the value of the limit at that point is different. So if we have this type of discontinuities, we call it removable discontinuities. Now in the graph D, this function is also discontinuous. In this function, the left hand limit goes to 0 and the right hand limit at 0 goes to 1. So at 0, the limit of the function, that is left hand limit and the right hand limit, is different. So this type of discontinuity is known as jump discontinuity. In the graph E, the limit of the function at 0 does not exist. When we look at the limit at 0, it goes to positive infinity. तो जब भी हमारे पास लिमिट किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी होती है, दैट इज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, इट मीन्स the limit does not exist. So this type of discontinuity is known as infinite discontinuity. In the graph F, at point 0, we have rapid oscillations. So if at any point there is rapid oscillation, the limit does not exist. So this type of discontinuity is known as oscillating discontinuity. Properties of continuous functions. If f and g are continuous at point C, then their sum, their difference and their product is continuous at C. यानी आपके पास दो फंक्शंस हैं f एंड g, दोनों continuous हैं किसी पॉइंट C पे, तो sum of these functions, difference of these functions and product of these functions will also continuous at point C. And what about its quotient? F divided by g is continuous at C if g of C is not equal to 0. देखिए जब भी हमारे पास रैशनल फंक्शंस आ जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास न्यूमरेटर करता है. न्यूमरेटर जिस पॉइंट पे 0 हो जाता है, उस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है. ठीक है, तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी अपीयर होती है. ठीक है, तो इसलिए अगर f डिवाइड बाय g, अगर f और g कॉन्टीन्यूस हैं, लेकिन f डिवाइड बाय g कब कॉन्टीन्यूस होगा? अगर c पॉइंट पे g 0 के इक्वल नहीं होगा. अगर g ऑफ c 0 के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट पॉइंट C. There are some other properties of the functions, continuous functions. Composites of continuous functions are continuous. यानी अगर आपके पास दो functions continuous functions हैं, तो उनका composition function भी continuous function होगा. A polynomial is continuous everywhere. Polynomial functions ऐसे functions हैं जो हर point पे continuous होते हैं. A rational function is continuous at every point where the denominator is non-zero and has discontinuities at the points where the denominator is 0. अच्छा, rational functions कौन से functions होते हैं? जो हमारे पास polynomials के quotient होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास जब भी rational functions होते हैं, तो हमारे पास मसला denominator करता है. ठीक है, तो अगर आपका rational function continuous है हर point पे, तो इसका मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर में जो भी पोलिनोमियल है वो हर पॉइंट पे नॉन ज़ीरो है. ठीक है, अगर आपने किसी रैशनल फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज एट विच डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो. ठीक है, जिन पॉइंट्स पे आपका रैशनल फंक्शंस का डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल है, उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा.
the absolute value of the continuous function is continuous। ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा। In this example, we have to find the points of discontinuities of the given function and the function is rational function। तो अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि रैशनल फंक्शंस की डिसकंटिन्यूटीज कैसे फाइंड करते हैं। जिन पॉइंट्स पे रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल होता है वो रैशनल फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होते हैं। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, रैशनल फंक्शन के को फैक्टराइज कर, जो रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, हम डिनोमिनेटर को देखेंगे कि ये किस पॉइंट पे ज़ीरो आंसर देता है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स हमारे पास बन जाते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ठीक है, तो ये हमें ज़ीरो कब देंगे, जब x माइनस 2 ज़ीरो के इक्वल होगा और x माइनस 3 ज़ीरो के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो जब भी कोई रैशनल फंक्शन आए आपने उसकी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स एट विच इट्स डिनोमिनेटर इज ज़ीरो। You can see in the graph at point 2 you have limit going to infinity, limit does not exist, and at point 3 there is a hole। Show that absolute value of x is continuous everywhere। जब हमने absolute value of x की continuity को डिस्कस करना है कि absolute value of x हर पॉइंट पे continuous होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखें सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ पीसवाइज फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। फॉर x ग्रेटर देन ज़ीरो इट इज़ x, फॉर x इक्वल टू ज़ीरो इट इज़ ज़ीरो, फॉर x लेस देन ज़ीरो इट इज़ माइनस x। ठीक है, अब जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरवल के जिस पॉइंट पे आपके पास फंक्शंस चेंज हो रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है अबाउट कंटिन्यूटी। तो हम सिर्फ इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बाकी इंटरवल के पॉइंट्स पे देखिए आपके पास फंक्शन पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स हर पॉइंट पे आपके पास कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ पे है जहाँ पे आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, जस्ट हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम ज़ीरो पे कंटिन्यूटी चेक करें तो ज़ीरो पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो ज़ीरो पे देखें, ज़ीरो पे आपके फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, सो फंक्शन इज़ डिफाइंड एट ज़ीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहले हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड की। फॉर द राइट हैंड लिमिट वी हैव द फंक्शन x, because for the right hand limit we have to take the values of x greater than 0। so for x greater than 0 we have function x। हमने x यूज़ किया, इस पे आपने लिमिट अप्लाई की तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के इक्वल आ गई। नाउ सॉरी राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल आ गई। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, इन द लेफ्ट हैंड लिमिट you have to discuss the values of x less than 0। so for this we have the function minus x। माइनस एक्स पे हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की तो वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो। so left hand limit and the right hand limit is equal to 0, so the two-sided limit at x as x approaches to 0 is 0 and the value of f at 0 is also 0। third condition also satisfies। so this function is continuous at 0 and this function is continuous everywhere। the intermediate value theorem। this theorem says if f is continuous on the closed interval ab and k is any number between f of a and f of b inclusive, then there is at least one number x in the interval
AB such that f of x is equal to k. ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी then and k is any number between f of a and f of b, then there is at least one number x in the interval a b for which f of x, the value of function at x is k. ठीक है, तो इस सब के लिए जो मेन कंडीशन है वो ये है कि आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी हमारे पास ऐसा एक के लिए वैल्यू x एग्जिस्ट करेगी कि हमारे पास f of x is equal to k. Now there are some examples related to continuity of the function. In this example, we have to find the value of x at which f is not continuous, where f is given in part A and part B. Well, we have to find the points of discontinuities in simple words. ठीक है, A part में देखिए आपके पास रैशनल फंक्शन है, वी हैव रैशनल फंक्शन. तो रैशनल फंक्शन के लिए पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कैसे फाइंड करते हैं? डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पे ज़ीरो होता है वो पॉइंट्स रैशनल फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होते हैं. ठीक है, तो डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल रखें, इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो और x की वैल्यू -1/2 आ जाती है. तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जिसपे ये रैशनल फंक्शन ज़ीरो रैशनल फंक्शन का जो रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, so this is the point of discontinuity. Now in the B part you have to solve it by yourself. इसमें आपने सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास रैशनल फंक्शन बन जाना है. फिर रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे ज़ीरो देगा वो पॉइंट्स आपके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगे फॉर दिस फंक्शन. In this example, find the value of the constant k and m if possible, that will make the function continuous everywhere for this function f. अच्छा, अब इस फंक्शन में आपके पास तो कांस्टेंट हैं अननोन m and k. वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट्स in such a way that it makes this function continuous function at every point. अच्छा, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टीन्यूटी यूज़ करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपका इंटरवल 2 पे भी ब्रेक हो रहा है और -1 पे भी ब्रेक हो रहा है. ठीक है, यानी यहाँ पे आपके फंक्शंस चेंज हो रहा है. तो जिन पॉइंट्स पे आपके फंक्शंस चेंज होते हैं वहाँ पे कॉन्टीन्यूटी का कोई इशू हो सकता है. ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूटी फाइंड करेंगे. ठीक है, वहीं से हमारे पास m और k की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी. फर्स्ट वी विल डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2. उसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एट x इज इक्वल टू 2. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें देखना है कि x इज़ लेस देन 2 कहाँ पे है. ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन है फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एज x अप्रोचेस टू 2. ठीक है, तो ये हमने फंक्शन लिखा, इसमें आपने लिमिट अप्लाई की, x की जगह 2 पुट करें. सो वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट 3m plus k. Now for the right hand limit we will take a function x square plus 5, because for the right hand limit we have to take the values of x which are greater than 2. So the function will be x square plus 5. We will apply the limit, we'll put 2 in x. So we have right hand limit 9. Now for the continuous function, the left hand limit and the right hand limit must be equal. So by equating these two limits, we have the equation 3m plus k is equal to 9. We will name this equation as 1. Now we will discuss the continuity at x is equal to -1 for the given function. First we will find the left hand limit. For the left hand limit at x as x approaches to -1, we will
have the function 2x cube plus x plus 7, because for the left hand limit the values of x must be less than -1. So for this condition we have this function. Now applying limit as x approaches to -1 on this function, we have left hand limit 4. Now right hand limit, for the right hand limit we will take a function for which x is greater than -1. So x is greater than -1 is here. So this will be the function for right hand limit as x approaches to -1. So applying limit on this function, we will have k as a right hand limit. Now using the condition of continuity, left hand limit must be equal to right hand limit. By equating both limits, we will get value of k, which is 4. Now we will put this value of k in equation 1. So we will have the value of m, that is 5/3. So these are the values of k and m for which the given function is continuous everywhere. In this example, we have to find the interval for which the given function is continuous. अच्छा, तो आपके पास कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस अपनी डोमेन में ही होता है, अपनी डोमेन से बाहर वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है. So if we have to find the interval for which the given function is continuous, so basically we have to find the domain of this function. So for this function, x minus 2 is in the denominator, so denominator must not be 0 at any point. We will exclude that point where the denominator is 0, and x minus 2, because of the square root, must be greater than 0. So using this condition, x minus 2 must be greater than 0. We have x is greater than 2, so this is the domain of the given function, and this is the interval on which the function f is continuous. So this is the summary of the today's lecture. The graph of the function can be described as a continuous curve if it has no break or holes. A function f is said to be continuous at x is equal to c provided limit of f as x approaches to z is equal to the value of f at c. यानी ये थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है continuous function at continuity of function at point की. ठीक है, तो अगर आप ये थर्ड कंडीशन ही सेटिस्फाई कर लें तो आप कंटिन्यूटी को प्रूफ कर देते हैं एट एनी पॉइंट सी. A function f is said to be continuous on the closed interval. अगर आपने किसी closed interval में continuity find करनी है तो उसके लिए you have to find the continuity of the interior points, and you have to find the continuity at boundary points. There are 4 types of discontinuities: removable discontinuity, jump discontinuity, infinite discontinuity, and oscillating discontinuities. If f and g are continuous at c, then f plus g, f minus g, and f g are also continuous at c. अगर f और g continuous functions हैं तो इन दो functions का sum, difference और product भी continuous function ही होगा. If f and g are continuous at c, then f divided by g is also continuous at c provided that g of c is not equal to 0. Okay, अगर इस पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फिर ये रैशनल फंक्शन जो है ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट पॉइंट सी. अगर आपके पास दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा. A polynomial is continuous everywhere. Polynomials हर पॉइंट पे continuous होते हैं. A rational function is continuous at every point where the denominator is non-zero. ठीक है, and has discontinuities at points where the denominator is 0. जिन points पे denominator non-zero होता है rational function उन points पे continuous होता है, और जिन points पे denominator 0 होता है उन points पे rational function discontinuous होता है. The absolute value of the continuous functions is continuous. If f is continuous on a closed interval a b and k is any number between f of a and f of b, then there is at least one number x in the interval a b such that f of x is equal to k.
दिस इज़ द प्रैक्टिस एक्सरसाइज कैलकुलस बाय एंटन। ये बुक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ईमेल भी की हुई है और टीम पे भी अपलोड हुई हुई है। ठीक है, तो आप इसकी एक्सरसाइज 1.5 के ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं, मेंशन क्वेश्चंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, आपस में डिस्कस करें और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो फिर अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।